Okay, breaking news playing out right now in Bihar. We're learning right now that following the growing opposition controversy that was created earlier by a district education officer in Kishanganj's order that private schools affiliated with the CBSE should be teaching Urdu, we're learning now that the officer has withdrawn the order. All private schools in the district will just be running as per the rules of the CBSE board going forward. Now, we'll wait for a reporter to join us, but let's just bring you a little bit more context in this story. This was a recent order given to private schools in the area. Kishanganj is a minority-dominated district within Bihar, and the decision itself actually came after a meeting of the District Development Coordination and Monitoring Committee. It had been held back in 2024 in October, when the Congress Kishanganj MP and the Congress MLA had noted that Urdu was not being taught in private schools in the district. It's then that the DEO had issued the order based on the decision that was taken in the meeting. So, in a sense, it is a decision that had been in the offing for a few months now. A district official had given this information. Now we do have reporters joining us on this story. Chandra Mohan is joining us to bring us more details on this story. Chandra Mohan जी हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद. Chandra Mohan जी, हमने बीजेपी की इस पे प्रतिक्रिया देखी थी. We'd watched as the BJP had a problem with it. They said that the private schools should operate according to CBSE rules. But अब हम हमें बता सकते हैं अब क्या हुआ है? एजुकेशनल ऑफिसर ने विड्रॉ कर दिया है नोटिफिकेशन. क्या रीजन दिया है उन्होंने? बिल्कुल, देखिए, जब से ये जिला शिक्षा अधिकारी ने ये लेटर जारी किया था कि किशनगंज के प्राइवेट स्कूलों में उर्दू पढ़ाना होगा, उसके बाद बिहार में राजनीति गर्मा गई थी और जमकर एक दूसरे के ऊपर सवाल खड़े कर रहे थे। और बीजेपी के तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया था कि कोई भी जबरन प्राइवेट स्कूलों पर उर्दू पढ़ाने के लिए दबाव नहीं डाल सकता। और उसके बाद यह लेटर जारी हुआ है। डीईओ ने फिर से जो पुराना अपना आदेश जारी किया था उसको विड्रॉ कर लिया है और साफ तौर पर यह कहा है कि सीबीएसई नॉर्म्स के मुताबिक जो भी पढ़ाई हो वो करा सकते हैं। तो ऐसे में साफ तौर पर समझा जा सकता है कि पहले ये आदेश जारी होता है किशनगंज डीईओ के तरफ से कि जिले के जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं वहां पर अब उर्दू की पढ़ाई सुनिश्चित की जाए। और जब इसको लेकर बवाल मचा, हंगामा हुआ और एक दूसरे के ऊपर सवाल खड़े करने लगे, उसके बाद इस आदेश को विड्रॉ कर लिया गया है कि सीबीएसई नॉर्म्स के मुताबिक जो भी गाइडलाइन है सीबीएसई का, उसके मुताबिक अब पढ़ाई सुनिश्चित करें स्कूल वाले। तो जो आदेश पहले जारी हुआ था डीईओ की तरफ से, उसको अब विड्रॉ कर लिया गया है। Thank you, Chandra Mohan ji, for bringing us more details on that story. Okay, we're going to be heading into a quick break. On the other side, of course, we have more of the country and the world stories for you. But before we let you go, it's that time of the year again. The Indian of the Year Awards are back. This is your chance to celebrate the visionaries, the icons that have been making India proud in the last year. Right from trailblazing business leaders to inspiring youth icons, to entertainers, to sports legends, change makers. These are the individuals that have left their mark, inspiring millions worldwide. And you can show your support by voting for your favorite Indian at www.indianoftheyear.com. Together, let's honor India's pride, those who've been the world's inspiration. RP Sanjeev Goenka Group presents